uploadvulns.com। तो आज हम दोबारा से वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ से हमने डे 1 पे लेफ्ट किया था। आई होप के स्ट्रीम ठीक आ रही है आपकी तरफ। इफ देयर इज एन इशू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आज के स्ट्रीम के एंड पे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सो वेट फॉर दैट। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स go into that. Okay, I'm gonna receive the notification for going live. Okay, so the upload vulnerability. Okay, let's start guys. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मशीन लॉन्च करने वाला हूँ एज यू नो गाइज फ्रॉम प्रीवियस 2 स्ट्रीम्स। स्टार्ट मशीन स्टार्ट जब मैं करूँगा तो यहाँ पे एक IP एड्रेस आ जाएगा। इतनी देर में मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को VPN के ज़रिए से कनेक्ट कर लेता हूँ ट्राई हैकमी के VPN के साथ, के नेटवर्क के साथ। ओके, ये साइट्स ऑलरेडी खुली हुई हैं जो कि हमने फाइल अपलोड ओवर राइटिंग की थी और फ्लैग भी कैप्चर किया था। तो अभी हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे एक टर्मिनल खोलना पड़ेगा। sudo su जब आपने रूट एक्सेस लेनी है उस वक्त। तो अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड डाला तो यहाँ पे हमने हम इसको एग्जिट करके sudo open VPN के ज़रिए से करते हैं। कमांड मैंने ऑलरेडी की हुई है और ये कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको पिछली स्ट्रीम में दे चुका हूँ या पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। अच्छा, ये अब हम कनेक्ट हो गए। तो इसको मैं ओपन रहने देता हूँ, लेकिन इसको एज ए बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे कि क्या कनेक्टिविटी हो रही है। इतनी देर में या मशीन का IP एड्रेस आ चुका है। तो आपको पता है अब हमने होस्ट फाइल जो है वो एडिट करनी है, तो लेट्स डू दैट। अच्छा, इसको भी एडिट करने के लिए आपको या तो फुल रूट में चले जाए। मैं रूट में चला गया हूँ। रूट के यूज़र से हम खोलेंगे अब इसको। तो नैनो में हम काम कर रहे थे एज यू कैन सी, /etc/host। यहाँ पे हम फाइल जो है बेसिकली अपडेट करेंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने डे 1 के ऊपर की थी, जो पहले स्ट्रीम हम कर चुके हैं। पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, IP एड्रेस बिल्कुल ठीक है, स्पेस अगर है तो ठीक है, इट्स ओके। कंट्रोल O टू राइट आउट, जस्ट प्रेस एंटर, फाइल नेम सेम रहेगा। कंट्रोल X टू एग्जिट। एक दफ़ा फिर चेक कर लें, अपडेट हो चुका है, वी आर गुड। लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा हम चेक कर लें गाइस कि ये चल भी रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको क्या हुआ, साइट इज एक्सेसिबल कि नहीं एक्सेसिबल, ये तो हम डाल चुके हैं इधर, राइट। Is going to 1440p as well, which is good and great, and quality is good and looking good as well. Quality is good and looking. Okay, yeah, so this is accessible. Yeah, very good. So इससे पहले कि हम कुछ चीज़ करें, इसका पिंग भी ये खोल लेते हैं ताकि हमें पता लगता जाए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। कंट्रोल X से वापस एग्जिट करो, इधर एक पिंग खोलो, क्लिपबोर्ड से जो है IP एड्रेस डालो और
address again, copy, copy, and I'm gonna put it in my VM. इससे मुझे एक तो लेटेंसी का पता लगता जाएगा, दूसरा कि ये VM स्टिल एक्सेसिबल है कि नहीं. ओके, सो वी आर गुड. आवर अरेंजमेंट इज डन. सब कुछ चल रहा है. गोइंग बैक टू द फिल्टरिंग. टास्क 6 पे हम आज आगे हैं फिल्टरिंग के ऊपर. पिछली एपिसोड में हमने रिमोट कोड एग्जीक्यूशन देखा था. अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो स्ट्रीम पिछली एपिसोड में अनकट स्ट्रीम है. जो भी इसमें इश्यूज आते हैं उसी वक्त हम रिजॉल्व करते हैं. अगर कोई सर्च करना पड़ता है तो हम गूगल पे सर्च भी करते हैं. सारी टेक्निक आपको बता रहे हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे एज ए वीडियो पोस्ट, तो फिर आपको इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें मिलेंगी. आई विल कंपाइल एवरीथिंग, कट एंड एड इट, एंड देन आई विल पोस्ट a good video on the same subject. Filtering, okay जी. Filtering पे क्या है जी हमारे पास. Up until now we have largely been ignoring the counter defenses, yes, employed by the web developers to defend against file upload vulnerabilities. Yes, every website that you have successfully attacked so far in this room has been completely insecure. Definitely, it's time that changed. Okay, from here on out, we'll be looking at some of the defense mechanisms used to prevent malicious file uploads and how to circumvent them. First up, let's discuss the differences between client-side filtering and the server-side filtering. When we talk about a script being client-side in the context of web applications, we mean that it's running in the user's browser as opposed to on the web server itself. JavaScript is pretty much ubiquitous as the client-side scripting languages. Yeah, although alternative do exist. हाँ, क्लाइंट साइड पे तो जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है, लेकिन अल्टरनेटिव डू एग्जिस्ट. कोई और लैंग्वेज भी यूज हो सकती है. वीबी स्क्रिप्ट भी यूज हो सकती है. Regardless of the language being used, a client-side script will be run in your web browser. That's correct. Client-side script जो है वेब ब्राउजर के अंदर रन होगा. तो इसका मतलब है कि वेब ब्राउजर के अंदर जो चीज़ रन होगी वो हम उसका बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे है, राइट. In the context of file upload, this means that the filtering occurs before the file is even uploaded to the server. Correct? Theoretically, this would seem like a good thing. Just a moment, guys. I'll be drinking a lot of water because my throat is dry a little bit today. Weather is changing, man. Filtering occurs before the file is even uploaded. Yeah, in an ideal world it would be, however, because the filtering is happening on our computer. It is really easy to bypass, as such client-side filtering by itself is a highly insecure method of verifying that an uploaded file is not malicious. Yeah. Conversely, as you may have guessed, a server-side script will be run on the server. That's correct. Client side आपकी वैलिडेशन हो या ना हो, लेकिन सर्वर साइड आपकी वैलिडेशन जरूर होनी चाहिए. Traditionally, PHP was the predominant server-side language. Yes, correct. With Microsoft ASP4 IIS coming in close second. ये करेक्ट है क्योंकि PHP जो है ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है. इसकी डिप्लॉयमेंट भी बहुत आसान है. लाइनक्स पे वो भी ओपन सोर्स है. डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट. वेयर एज माइक्रोसॉफ्ट की आईएस के लिए प्रोडक्शन के लिए यूजुअली आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ करते हो, तो उसके लिए पैसे हैं डेफिनेटली. अगर आप उसकी सपोर्ट आपको चाहिए तो लीगली इसके पैसे हैं. तो पैसे जब आप भरेंगे तो इसलिए जब ओपन सोर्स की बारी आती है तो PHP जो है इज़ प्रीडोमिनेंट. दैट्स करेक्ट. और इन रिसेंट ईयर्स अदर ऑप्शन C#, Node.js बहुत ज़्यादा कॉमन है. अब तो C# भी उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया. सो इट्स आल्सो यानी number one choice for the developers. Even now C# code can be deployed on the Linux and Mac as well. So
It's cross-platform now, especially post .NET Core 3.1. Even 1 was there, 2.1, 3.1, .NET 5 and 6, and now 7 is coming up. Python, Ruby on Rails, and a variety of others. Yeah, have become more widely used. That's correct. Server-side filtering tends to be more difficult to bypass. डेफिनेटली, क्योंकि ये कोड जो है सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है तो आपके पास कोई ऐसा वे नहीं होता, या अगर कोई वे है विदाउट हैकिंग इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कोई बाईपास कर सकते हैं अनलेस देयर इज अ लॉजिकल इशू इन द कोड इटसेल्फ, राइट, as you don't have the code in front of you. Yeah, okay. As the code is executed on the server, in most cases it will also be impossible to bypass the filter completely. Yeah. Instead, we have to farm a payload which conforms to the filter in place, but still allows us to execute our code. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जेपीजी का एक्सटेंशन लगाया कि सिर्फ जेपीजी ही आप ले सकते हैं और 200 किलोबाइट ही सिर्फ ले सकते हैं, तो अगर हमें कोई पेलोड भेजना है तो हम ऐसा पेलोड देंगे जो कि जिसकी एक्सटेंशन जेपीजी हो, लेकिन इंटरनली वो एग्जीक्यूटेबल होगी और होगी भी 200 किलोबाइट और लेस, राइट. सो दिस इज व्हाट दे मेंट बाय circumventing. अच्छा जी, extension validation. Yeah, file extension are used in theory to identify the content of the file. Yeah, in practice they are very easy to change. Yeah, definitely just dot और उसके बाद जो है जेपीजी की जगह डॉट एक्सी डाल दो, एक्सी बन जाएगी. लेकिन इट इट डज नॉट मीन के जेपीजी फाइल जो पिक्चर कंटेंट है वो एक्सी में कन्वर्ट करेंगे तो वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं है. एग्जीक्यूटेबल के लिए उसको उसका प्रोग्राम होना ज़रूरी है. अगर वो प्रोग्राम नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो डेफिनेटली अगर एग्जीक्यूटेबल है तो उसको किसी कंपाइलर के ज़रिए से कोई कोड आपने राइट किया होगा, फिर एक बिल्डिंग प्रोसेस के ज़रिए से आपने वो बिल्ड की होगी एक्सी फाइल, और उसके साथ डीएलएल फाइल्स होंगी अगर सपोर्टिंग डीएलएल फाइल्स है. लेकिन जेपीजी को एज ए एक्सी फाइल नहीं बनाया जा सकता. हाँ, आप एक्सी फाइल को जेपीजी के अंदर बाइंड कर सकते हैं कि जैसे ही वो जेपीजी फाइल खोले तो जो एक्सी फाइल उसके साथ बाइंड हुई हुई है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी. ओके, just a moment guys, let me copy paste the link in my chat so people can join us. Hey, we are done. ओके, अच्छा जी, चलो जी यहाँ से पढ़ते हैं. इन प्रैक्टिस दे आर वेरी इजी टू चेंज एज वी एक्सप्लेन. कैसे चेंज हो सकते हैं? सो एक्चुअली don't mean much. However, MS Windows still uses them to identify file types. Yeah, MS Windows की अपनी उन्होंने चीज़ें build की हुई हैं on top of the kernel. So although in Unix based system tend to rely on other method which we will cover in a bit. Filters that check for extension work in one of two ways. They either blacklist extensions. Blacklist extension is okay, but whitelisting is better choice. बिकॉज आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी चीज़ परमिट है, बाकी सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट. सो इट्स बेटर इफ यू वाइट लिस्ट समथिंग rather than blacklist. Blacklist में तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ना. Have a list of extensions which are not allowed, or the whitelist extension have a list of extensions which are allowed and reject everything else. This is the better solution while whitelisting. So usually you will find that it's a white listing. Hello, Sad. How are you? You can come on my Discord server as well, bro. For live chat if you want. One moment. Yeah, you are offline there. I'm good, thank you. How are you, sir? Hey, so file type filtering, similar to extension validation, बट मोर इंटेंसिव. अब फाइल टाइप है, बेसिकली टाइप से मुराद है कि जो अगर मैंने जेपीजी इसमें डाली है तो मुझे जो टाइप है उसकी जेपीजी ही मिलनी चाहिए, कोई और चीज़ मेरे पास नहीं आनी चाहिए, राइट. File type filtering looks once again to verify that the content of a file are acceptable to upload. We'll be looking at two types of file type validation. MIME type
माइम कहते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। माइम टाइप जो है बेसिकली फाइल की टाइप इटसेल्फ, लेकिन उसको एक कैटेगरी में डाला हुआ है। जैसे इमेज है तो जेपीजी है और पीएनजी है वगैरह वगैरह वगैरह। ये अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एक्सप्लोर करते जाएंगे। टाइप्स आर यूज एज एन आइडेंटिफायर फॉर द फाइल्स ओरिजिनली व्हेन ट्रांसफर्ड एज अटैचमेंट्स ओवर email, definitely, but now also when files are being transferred over http or https. It should be https by now in 2022। अगर आपको अभी भी नहीं है, अभी एच टी टी पी पे चला रहे हैं तो देर इज़ अ प्रोडक्शन सिस्टम, अगर अभी भी एच टी टी पी चला रहे हैं तो देर इज़ अ सीरियस इशू विद योर वेबसाइट। कुछ भी हो सकता है। एच टी पी एस पे डालें ताकि सिक्योर हो और आपके यूज़र का डाटा जो है वो क्लियर टेक्स्ट में ना जाए। ओके। The MIME tab for a file upload is attached in the header of the request and looks something like this। ठीक है जी, इसको पढ़ते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट है और बिल्कुल रूट यूआरएल पे ऊपर है HTTP 1.1 वर्जन है, होस्ट है demo.uploadvulns.thm। ठीक है जी। और यूज़र एजेंट जो है मोजिला यूज़ कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है, या बल्कि आप चेंज करके भी भेज सकते हैं। अच्छा जी, एक्सेप्ट क्या है? जो मुझे मैं जिस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट और एच टी एम एल के अंदर आप भेजेंगे और उसका वर्जन लिखा हुआ है। एक्सेप्ट लैंग्वेजेस इनकोडिंग gzip, और gzip से मुराद है अगर कोई चीज़ फाइल्स आपने कंप्रेस करके तो भेजनी है तो वो जी जी gzip और डिफ्लेट मैनर में आ सकती हैं। रेफर कहाँ से मैंने वो क्लिक किया है वो बेसिकली उसी यूआरएल के ऊपर है। फॉर टाइप मल्टी पार्ट एंड फार्म डाटा, इसका मतलब कि मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ। मल्टी पार्ट से मुराद है कि कोई चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ वो फार्म डाटा के तौर पे पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड ही शुरू में पोस्ट का, तो इसका मतलब है कि पोस्ट कोई चीज़ कर। कंटेंट की लेंथ जो है वो रन टाइम पे कैलकुलेट करके उसके साथ अटैच कर देते हैं ताकि जब रिसीव हो सर्वर में तो वो लेंथ चेक कर ले कि डाटा मुझे पूरा रिसीव हुआ है, कनेक्शन क्लोज हो गया, अपग्रेड इन सिक्योर रिक्वेस्ट वन। नीचे बता दिया कि क्या चीज़ आप अपलोड कर रहे हैं, कंटेंट डिपोजिशन, डाटा फॉर्म, नेम फाइल का, और फाइल नेम सैपियन डॉट और टाइप उसकी आ गई यहाँ। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। माई टाइप फॉलोज द फॉर्मेट टाइप एंड सब टाइप। ठीक है जी, टाइप और सब टाइप। इस केस में इमेज टाइप है और जेपीईजी सब टाइप। इन द रिक्वेस्ट अबव यू कैन सी दैट द इमेज spaniel डॉट जेपीजी, एक एक्सटेंशन ये भी होती है, जेपीईजी भी होती है और जेपीजी भी होती है, was uploaded to the server as a legitimate JPG image. The MIME type of this upload was image dash JPEG. The MIME type for a file can be changed, checked client side or on server side. Server side पर तो ज़रूर check करना है for all of the developers that are listening to this stream. However, as MIME is based upon the extension of the file, this is extremely easy to bypass. Yeah. Okay, so magic number validation. Magic number से क्या मुराद है? Let's see that. Magic numbers are the more accurate way of determining the content of a file, although by they are by no means impossible to fake. The magic number of a file is string of the bytes at the very beginning of the file content, which identifies the content. For example, a PNG file would have these bytes at the very top of the file. तो जब आप फाइल के टॉप पे जाएंगे तो उसके अंदर आपको शुरू में ही एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। ये हेक्साडेसिमल में है और ये बाइनरी में है और वो फॉर्म करेगा .png। और यूजली आप ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जब आपने फाइल क्रिएट किया तो उसकी इंटरनली एक एक्सटेंशन बना के डाल दी जाएगी एज ए स्टार्टअप ऑफ द क्लास, स्टार्टअप ऑफ द फाइल इटसेल्फ। लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है, हर डिजिटल चीज़ को चेंज किया जा सकता है। अच्छा आगे चलते हैं। अनलाइक विंडोज़, यूनिक्स सिस्टम यूज मैजिक नंबर्स फॉर आइडेंटिफाइंग फाइल्स। अच्छा, ये मैजिक नंबर जो हैं ये यूनिक्स सिस्टम्स में है। यूनिक्स सिस्टम से मेरा आता है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स का कर्नल यूज़ कर रहे हैं, अदर दैन विंडोज़ भी इवन यूनिक्स का ही कर्नल यूज़ कर रही है लेकिन उन्होंने चेंज किया।
However, when dealing with file upload, it is possible to check the magic number of the uploaded file to ensure that it is safe to accept. This is by no means a guaranteed solution, but it's more effective than checking the extension of the file. That's correct. File length filtering. File length filters are used to prevent the huge file from being uploaded to the server via an upload form, as this can potentially start the server of resources. हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप 200 केबी की ही फाइल इमेज अपलोड करने दे सकते हैं, तो कोई बंदा आके 10 GB की फाइल अपलोड करने की कोशिश कर दे, तो क्या होगा? अगर कंटेनर है तो उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर सर्वर साइड आप लेके जा रहे हैं तो वो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और अगर इसने 10-12 अगर रिक्वेस्ट इस तरह की भेज दी, तो जितने भी आपके कंटेनर सारे क्रैश होते जाएंगे। अब कंटेनर्स पे नहीं, आप किसी और थर्ड पार्टी सिस्टम पे लेके जा रहे हैं, और वो भी अगर उसकी भी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, यूजली इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो क्या होगा कि वो सर्वर के जो है रिसोर्सेज वो स्टार होना शुरू हो जाएंगे। पेज फाइल वो यूज़ करना शुरू कर देगा, जो सिस्टम की पेज फाइल हार्ड डिस्क के ऊपर। उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कंटेंशन में आ जाएंगे, और फिर परफॉर्मेंस ओवरऑल सोल्यूशन की जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर कंटेंट की लेंथ के ऊपर जो है वो फिल्टरिंग लगानी है। फाइल लेंथ filtering, hence file length filtering. In many cases, this will not cause us any issues when we upload shelf. However, it's worth bearing in mind that if an upload uh, from only accepts a very small file to be uploaded, there may be length filter in place to ensure that the file length requirement is adhered to. As an example, our fully fledged PHP reverse shelf from the previous task is just 5.4 KB, man. That's amazing. Relatively tiny, but if the farm expect a maximum of 2 KB, then we would need to find an alternative shell to upload. Basically 2.4 KB of file is यानी 5.4 KB of file is good enough. इवन आप इमेज भी लेंगे तो मैं मतलब कम से कम भी आप 20 KB 50 KB की तो इमेज लेंगे ना, गुड रेजोल्यूशन की। Okay, file name filtering. As touched upon previously, files uploaded to a server should be unique. Uh, Usually, this would mean adding a random aspect to the file name. However, an alternative strategy would be to check if a file with same name already exists on the server and give the user an error if so. Additionally, file names should be sanitized on upload to ensure that they don't contain any bad characters. Yes. So you must have a sanitized solution. There are multiple sanitized solution. अब तो हर कोई दे रहा है। आई I मीन mean, कोई भी बड़ा बड़ा जो एंटीवायरस कंपनी थी, अब वो इन चीज़ों में भी आ गई है। उसको फाइल दो, वो अपलोड कर देगा। फाइल इवन सर्वर तक नहीं पहुंचती, अब आई कैप प्रोटोकॉल के जरिए से फाइल अपलोड हो रही है, तो वो नेटवर्क के ऊपर से ही उठा लेता है और उसको स्कैन करके फिर आगे भेजता है। अगर उसमें कोई मसला तो वो सर्वर पे जाएगी नहीं, which could potentially cause problem on the file system when uploaded, e.g. null bytes or forward slash or only Linux, as well as control characters such as semicolon and potentially Unicode characters. Yep. What this means for us is that on a well administered system, आजकल सारे ही आ रहे हैं, जो भी आप यूज़ करेंगे यूजली सबके पास अब सिक्योरिटी अवेयरनेस आ चुकी है, और हर कोई ये चीज़ें जो है एटलीस्ट इन्फोर्स करता है। Our uploaded files are unlikely to have the same name we gave them before uploading, so be aware that you may have to go hunting for your shell in the event that you manage to bypass the content filtering. Okay, file content filtering. More complicated filtering systems may scan the full content of an uploaded file to ensure that it's not spoofing its extension. Okay, find a magic number. This is a significant more complex process than the majority of the basic filtering system employ. Thus, this will not be covered in this round. Okay,
जेनेरिक करेंगे, थोड़ा ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल तक तो रखेंगे, हार्ड तक तो वो मे बी नेक्स्ट कोई रूम आए जो हार्ड लेवल तक लेके जाए. Okay. It's worth noting that none of these filters are perfect by themselves. They will usually be used in conjunction with each other, providing a multi-layered filter thus increase the security of the upload significantly. Significantly. Yeah. Any of these filters can all be applied client side, server side, or both. You should always apply at least server side, but for good user experience, you should also apply it on the client side as well. So both are necessary, I would say. Similarly, different frameworks and languages come with their own inherent method of filtering and validating upload files. As a result, it is possible for language specific expire to appear. For example, until PHP major version 5, it was possible to bypass an extension filter by appending a null byte, yeah, followed by a valid extension to the malicious .php file. More recently, it was also possible to inject PHP code into the EXIF data of an otherwise valid image file. EXIF data का पता क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जो इमेज का प्रॉपर्टीज लेते हैं और उसके अंदर डाटा नहीं आता कि इमेज की क्या लेंथ है, कब कैप्चर हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह, वो EXIF डाटा है इसका. Then force the server to execute it. These are things that you are welcome to research further should you be interested. Okay, what is the traditional predominant server side scripting language? PHP, we already know that. ये स्ट्राइक वन पे फिर दोबारा से कोशिश करते हैं इसको हर रोज किया जाए ताकि हमारी एक चीज़ बन जाए. आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम कि आगे नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं. When validating by file extension, what would you call a list of accepted extension, whereas the server rejects any whitelisting, right? Whitelist, whitelist. Yeah. Research. What MIME type would you expect to see when uploading a CSV file? So let's search CSV MIME type. Text CSV. ये रही कॉपी. Yeah, so we are done without any practical for filtering. आगे आएगा आई थिंक बाईपासिंग द क्लाइंट साइड फिल्टरिंग. ये तो बड़ा आसान है. फिर आगे बाईपासिंग सर्वर साइड फिल्टरिंग और फिर बाईपासिंग सर्वर साइड. तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है. इसको पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे. ओके Okay, so task 7, bypass client side filtering. We'll begin with the first and weakest line of defense, client side filtering. As mentioned previously, client side filtering tends to be extremely easy to bypass as it's occur entirely on a machine that you control. When you have access to the code, it's very easy to alter it. There are 4 easy ways to bypass your average client side file upload filter. Okay, turn off the जावास्क्रिप्ट इन योर ब्राउज़र में जब टर्न ऑफ द जावास्क्रिप्ट करेंगे तो आजकल तो जावास्क्रिप्ट की सारी ऑलमोस्ट हर चीज़ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं फॉर डिज़ाइनिंग बूटस्ट्रैप और व्हाट नॉट. तो जैसे आप टर्न ऑफ करेंगे तो डिज़ाइन आगे पीछे हो जाएगा तो फिर आप ब्राउज़ भी नहीं कर सकेंगे. तो यूजली लोग नहीं करते लेकिन आप कर सकते हैं. बाय द वे दिस विल वर्क provided the site does not require JavaScript in order to provide the basic functionality. Usually it is required. If turning off JavaScript completely will prevent the site from working at all, then one of the other method would be more desirable. Otherwise, this can be an effective way of completely bypassing the client side. Or you can use burp suite or something like that, the tools to post the request without dealing with the JavaScript. You can just post any request. Okay, intercept and modify the incoming page. Yeah, using burp suite. burp suite भी हम यूज करेंगे. अभी हमने इस चैनल पे burp suite यूज नहीं किया लेकिन ये भी हम करेंगे.
Okay, it happens then. We need to change the current resolution is basically it's going on low stream. तो लो लेटेंसी, तो वो कह रहे हैं कि इसकी रेजोल्यूशन कम करो, लेकिन मैं इसी में करूँगा। कल मैं जो है नॉर्मल पे इसको चलाऊँ इंशाल्लाह। क्लोज कैप्शन नहीं है बट इट्स ओके, नो 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 इश्यूज। लेट्स मूव ऑन गाइस। अच्छा जी, burp suit. Using burp suit we can intercept the incoming web page and strip out JavaScript filter uh, before it has a chance to run. ठीक है, the process for this will be covered below. Oh, okay, so they will be using the burp suit in this one. Okay, intercept and modify the file upload where the previous method works before the page is uploaded. Okay, this method allows the web page to load as normal, but intercept the file upload after it's already passed and being accepted by the filter. Again, we will cover the process for using this method in the course of the task. Okay, इंटरसेप्ट कैसे करना है, इसको मॉडिफाई करके कैसे करना है, वो भी हम करेंगे. Welcome back, whoever joins the stream now. There are two people now. Just let me put the analytics. Can viewers? Okay. Send the file directly to the upload point. Why use the web page with the filter when you can send the file directly using tool like car? तो आपको ब्राउज़र यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको पता है कि क्या पैरामीटर आ रहे हैं, आप कर्ल के ज़रिए से डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं. बस यूजली कर्ल के साथ काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर चाहिए होते हैं, अनलेस कि आपने कोई ऑटोमेटेड रेपिटेशन में ही कोई स्टेप परफॉर्म करना है, तो आप कर्ल यूज़ कर लें फॉर लूप वगैरह वगैरह में. नहीं तो बर्ब सूट जो है इज़ अ वेरी इजियर चॉइस even for professional hackers as well. Posting the data directly to the page which contains the code for handling the file upload is another effective method for completely bypassing a client side filter. Okay, we'll not be covering this method in any real depth in this tutorial. It's okay, however the syntax for such a command would look like below. Yeah, okay. अभी इसका जायज़ा नहीं लेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल जहाँ पे कर्ल इट्सल्फ इज़ नेसेसरी हम वहाँ पे करके देखेंगे. टू यूज़ दिस मेथड you would first aim to intercept a successful upload using the burp suit on or the browser console to see the parameter being used in the upload, which can then be slotted into the above command. We'll be covering method 2 and 3. 2 and 3 ये वाले हैं, यानी कि बर्ब सूट के जरिए से जो भी हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे. लेट्स अज्यूम दैट वी अगेन हैव फाउंड एन अपलोड पेज ऑन ए वेबसाइट. अच्छा, ये फिक्शनल पेज है, ये हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जब वो नीचे पूछेगा ना लैब के अंदर, तो उसके अंदर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे. पेज उन्होंने अपलोड कर लिया ब्राउज़र के अंदर, देख लिया. एज ऑलवेज विल टेक ए लुक एट द सोर्स कोड जो कि क्लाइंट साइड पे रेंडर हुआ है HTML की फॉर्म में. Here we see a basic JavaScript function checking for the MIME type of the uploaded files. तो हमने उसका सोर्स कोड देख लिया कि ये चेक क्या कर रहा है, राइट. तो इसको हम चेंज कर सकते हैं. क्लाइंट साइड पे रन हो रहा है तो क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड खुला हुआ है तो इसको चेंज कर सकते हैं, बाईपास भी कर सकते हैं. If this is we can see the filter is using the white list to exclude any MIME type that isn't image/jpeg. यहाँ पे कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ही हमें कैसे पता लगा ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर है कोड, इसलिए. Our next step is to attempt a file upload as expected. If we choose a JPEG, the function accepts it. Anything else, the upload is rejected. Having established this, let's start burp suit. Reload the page. You will see our own request to the site. अच्छा, ये अभी हमने करना नहीं है, बस हमने देखते जाना कि कर क्या है, और ये सेम स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे इन अ डिफरेंट सिनेरियो. बट what we really want to see in the server's response, so right click on the intercepted data, scroll down to do intercept. Okay, and then select response to this request. When we click the forward button, okay,
At the top of the window, we'll then see the server's response to our request. Here we can delete, comment out, or otherwise break the JavaScript function before it has a chance to load. ओके, इसको ब्रेक करके इधर हम चेंज करके तो कोई ना कोई चीज़ डाल सकते हैं. Having deleted the functions, we once again click forward until the site has finished loading and are now free to upload any kind of the file. तो इसने क्या किया, इसने टोटली फंक्शन ही खराब इधर से ना. ऑन लोड पे उसने कॉल किया, विंडो डॉट ऑन लोड फंक्शन कुछ कॉल करेगा, उसने सारा स्क्रिप्ट ही उड़ा दिया. तो अब कुछ भी नहीं कॉल होगा, तो आप जोन सी मर्जी या फाइल अपलोड कर सकते हैं एटलीस्ट सर क्लाइंट साइड से. Okay, it's worth noting here that Burpsuit will not by default intercept any external JavaScript files that the web page is loading. Okay, if you need to edit a script which is not inside the main page being loaded, you will need to go to the Options tab at the bottom of the Burpsuit window. Then under the Intercept Client Requests, इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट. हाँ, कुछ फाइल्स हो सकती हैं कि जो मेन पेज के अंदर ना हो, तो आप वो कहीं और से लोड होती हो सकता है CDN से लोड होती हो. तो अगर उनमें कोई चेंज कर रही है तो उसको उसके लिए फिर आपको इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट के अंदर से जाके चीज़ें करनी पड़ेगी. ऑप्शन टैब एट द टॉप ऑफ द वेबसाइट विंडो, देन अंडर द इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट सेक्शन एडिट द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट लाइन टू रिमूव. तो बेसिकली उन्होंने डाला हुआ है कि JS फाइल जो है वो उसको इनेबल कर दिया. तो इसका मतलब ये है कि इसको भी आप चेंज कर सकेंगे. जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो उसके ऊपर भी इंटरप्शन होती जाएगी. We have already bypassed this filter by intercepting and removing it prior to the page being loaded. But let's try doing it by uploading a file with a legitimate extension and mind tab, then intercepting and correcting the upload with the burp suit. Okay. Having reloaded the web page to put the filter back in place, let's take the reverse shell that we used before and rename it to be called shell.jpg. Okay, as the MIME type based on the file extension. Automatically checks out. Yeah, definitely. The client side filter lets our payload through without complaining. Yeah, definitely. क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया. Once again, we'll activate our burpsuit intercept, then click upload and cache the request. Okay. Just a moment, guys. ओके, तो इंटरसेप्ट इसने किया है, ये एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है जिसके अंदर से उसने शेल जो है पास किया और कंटेंट टाइप है टेक्स्ट डैश PHP. देखा, observe that the main type of our PHP shell is currently image dash JPG. We'll change this to text dash x dash PHP, and the file extension from JPG to dot PHP. Then forward the request to the server. Now we navigate to the uploads shell.php. Having set up a netcard listener, we receive a connection from this shell. We have covered in detail two way to bypass the client-side filter, client-side file upload filter. Now it's time for you to give it a shot for yourself. Navigate to the Java. Okay. तो जो चीज़ें ऊपर इसने बताई हैं उसी तरह से हमने करना है. तो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. और नीचे उसने कहा कि फ्लैग भी हमें बताओ, और जो पहले हमने चीज़ की थी रिवर्स शेल वाली वो इधर भी करनी है. And bypass the filter to get a reverse shell. Remember that not all client-side scripts are in line as mentioned previously. GoBuster would be a very good place to start here. The upload directory name will be changing with every new
change with every new change. Okay, वाली पे वापस ये चेंज हो गया। पहले तो देखें ये वेबसाइट चल भी रही है कि नहीं। ओके, नहीं चल रही क्योंकि हमने HTTP स्टार्ट में नहीं डाला, इसलिए नहीं चल रही। हमने जावा डॉट अपलोड डॉट ये डाला है, तो लेट्स सी। गूगल का तो नहीं, हम वेट कर रहे हैं बस। तो क्विकली कि यहाँ पे जावा वाला हमने डाला हुआ कि नहीं डाला हुआ, जावा डॉट अपलोड, हाँ या जस्ट इट्स टेक मोर टाइम टू कम अप। आ गया जी, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इसको मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि मेरा बर्ब सूट है वो चल रहा है फायरफॉक्स के साथ ESR, और ये मैंने बर्ब सूट चलाया हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ सारी रिक्वेस्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट काली आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दी, ये यहाँ पे आ गया। तो ये एक एक्सटेंशन है फोक्सी प्रॉक्सी, ठीक है। इसके अंदर आप बर्ब सूट का डाल दें, ये ऑलरेडी होगा आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं पता तो नेट पे सर्च कर लें इसको कैसे सेटअप करते हैं। कुछ 3-4 स्टेप्स हैं जो आपने टेक करने हैं और ये हो जाएगा। और फिर आप बर्ब सूट अपना खोलें। अच्छा, इसको मैं शुरू से खोलता हूँ ताकि आपको पता लगता जाए कि हो क्या रहा है। काले लिंक्स में जाएँ। वर्ब सूट एक वो फैशनल है जो कि जिसका आइकन डिफरेंट एक कम्युनिटी है। हम कम्युनिटी एडिशन फ्री एडिशन है, तो हम ये यूज़ करेंगे टेम्परेरी प्रोजेक्ट। क्लिक जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। करंट वर्जन है V2022 एंड समथिंग समथिंग। प्रॉक्सी पे जाएं, डायरेक्टली यहाँ पे टैब जो ऊपर आ रही है उस पर क्लिक करें। Again, I believe there is an issue or something. Mark, sweet. हमने इसको दोबारा खोला है। नेक्स्ट वेबसाइट, या बिल्कुल सही खोला। प्रॉक्सी पे जाओ, इंटरसेप्शन इज ऑन। अब जो है रिमेंबर डायल हम फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इसको एंटर करेंगे और ये रिक्वेस्ट बता दी इसने कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। इसको जस्ट फॉरवर्ड करते जाओ। या इट्स गुड। तो कर दिया ऑलरेडी। से फॉरवर्ड कर देते हैं, इसका मतलब है कि ब्राउज़र को आप पिकअप इसको कर लेना चाहिए।
मशीन ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो क्या चलना उसने। तो दैट्स वाई मशीन तो अभी 1 घंटे तक चलेगी। या मशीन रिस्पॉन्डिंग बैक अगेन, सो इट्स गुड। थोड़ी देर के लिए कंटेंशन आई हो। यस, वेरी गुड। प्रॉक्सी ऑन करो दोबारा। इसको हम दोबारा एक्सेस करते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं, ये उसी टाइम लोड होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ हमने क्या करना है, हमने एक सिलेक्ट करनी है फाइल। PHP ये हम इसको करें कॉपी और यहीं पे करें पेस्ट। ये हमारे पास कॉपी पेस्ट आ गया। इसकी हम एक्सटेंशन वगैरह चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका करते हैं रीनेम, और बल्कि इससे भी पहले हमें इसका सोर्स कोड व्यू करना है कि इसके अंदर चल क्या रहा है। ओके, अच्छा जी। इसके अंदर फर्स्ट लोड है, स्क्रिप्ट है, और ये वाली फाइल है। तो इसको हम न्यू विंडो में क्लिक करते हैं। ये दोबारा इधर जाएगा, नहीं नहीं गया। तो इसके अंदर बेसिकली इमेज डॉट पी एच पिंग के नाम से PNG, अच्छा PNG के नाम से है। तो आई थिंक जो हमारे पास फोल्डर ऑलरेडी खुला है, कर दिया। राइट, अब क्या है जी, अब हमने क्लाइंट साइड जो है स्क्रिप्ट वो भी लेके आने हैं। सब रिक्वेस्ट yes लगा तो है, does not match the relationship। think this is what they के अंदर पहली कॉल फॉरवर्ड की। based on the following rules, JS ether and $sign, just a minute, maybe match का हमने करना है। let me see what was the rule there। does not match के अंदर ही okay, add the condition first line to remove, यही हमने किया है, लेकिन वो बाईपास नहीं हुई। go back and try again, same thing।
फाइल जो है वो अपलोड करते हैं। ये हमने फाइल बनाई है कि हमें पता है ये पीएनजी लेगा फाइल, तो अपलोड करेगा। तो फाइल जब अपलोड हो रही है तो हम इसका चेंज कर देते हैं नेम, और इसकी टाइप भी हम चेंज करते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव डन। शेल डॉट पी एच पी, और ये टेक्स्ट डैश एक्स / x dash php. So this is what we're gonna do. Uploads, maybe uploads. इस केस में रिसोर्सेज नहीं था, राइट? हमारे केस में तो रिसोर्सेज था, पर लेट्स सी। चलिए, ये चल नहीं रहा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऑप्शन भी नहीं है, चेक करके देखो, वीएम ही बैठ जाती है इनकी। वीएम बैठ जाती है ट्राई हैक वालों की। पिंग का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, अब आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, और आ गया रिसोर्सेज में। इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमेज है, लेकिन हमारा फिर इमेज जो है उधर अपलोड नहीं हुआ। तो इमेज अपलोड करके देखते हैं। ये जी चाहिए। एक पीएनजी इमेज चाहिए, जो मैंने इसको किया है इमेजेस।
तो खोलते हैं और इसको पीएनजी इमेज सेव करते हैं। ये image है, इसकी फाइल है। png.png save. Okay, let's try. ये ट्राई करते हैं। पीएमई जो है इनकी अच्छी पेंडिंग है। नॉट श्योर कि क्या रिसोर्स कंटेंशन है, ये क्या चक्कर है। ये हो गया। बस रिसोर्सेज नहीं था यार। नोट्स भी नहीं आ रहा फिर से। इमेज यहाँ पड़ी है। हम्म, क्या हमें दोबारा ये डायरेक्टरी देखनी पड़ेगी कि कौन सी डायरेक्टरी है। ट्यूटोरियल में तो यार अपलोड्स बताया हुआ है, राइट। check quickly what was the basically फर्स्ट दोबारा चलाना पड़ेगा। किस था कि यही है। क्या चला दें लगे हाथों। तो गाइज यहाँ पे हमारी स्ट्रीम के वक्त होने का वक्त आ गया है।
तो कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे फंस गए हैं कि आ, कि इसके ऊपर कौन सा वो फोल्डर है जिधर वो चीज़ें अपलोड करता है। हमने एक पीएनजी फाइल अपलोड किया लेकिन वो हमें नज़र नहीं आई कहीं पे। तो वंस विल कम बैक, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ऑलमोस्ट 1 आवर पास ही हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बस यहाँ पे आएंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर योर पेशेंस विद मी। इट इज़ अनकट बेसिकली, सो यू नेवर नो कि कहाँ पे जाके आप फंस जाएंगे। uh, लेकिन जो एक्चुअल वीडियो इस चीज़ की फाइल अपलोड की मिलेगी, मैं अपनी साइट पे भी अपलोड करूँगा scientistg.com पे। वहाँ पे फुल स्टेप मिलेंगे और डेफिनेटली ये चीज़ जो है उस तरह से नहीं आएगी। लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम करने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग यू वुड नो डैट व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज आई फेस्ड एंड देन व्हाट स्टेप्स आई टुक टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। अच्छा, आई थिंक इशू रिजॉल्व हो जाएगा जैसे कि हमने पिछली स्ट्रीम में किया कि वीएम को जैसे ही मैं चेंज करूँगा तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर टुमारो। What will I do? I will just save its I will just suspend it. It will be saved, and then once we come back, we'll start from here. Okay, guys, thank you very much, and see you tomorrow, inshallah, at the same time, 11 p.m. KSA time. Bye.